They are 20% of the total population in Uttar Pradesh being a voter, but they are only seen as a vote bank. We're talking about the Muslim population in Uttar Pradesh. Hello, welcome. You're watching Election Roadie with me, Ashutosh Mishra, and today we're going to talk about the Muslim population of Uttar Pradesh, their core issues, and why they have only been seen as a vote bank. And today we are in Deoband. Deoband being one of the biggest, largest Asia's Islamic religious academic. It also has great population, almost 1/3 population of Muslim community. But they have also their own issues that need to be addressed. Over the years, in several elections, they were only seen as vote banks. Several promises made on the ground, but have those promises been delivered here in Deoband? Let's take you to Deoband first. 150 kilometers from Delhi, Deoband is the seat of the world-famous Darul Uloom Seminary, a seminary that wields a huge influence among Muslims. Not surprisingly, then, the town draws politicians of all hues every time an election comes around. Asaduddin Owaisi, whose MIM party is trying to expand its footprint in Uttar Pradesh in the coming assembly elections, came to Deoband to call for Muslim unity while voting. He may have been the first off the block, but Deoband is a priority stop for leaders of all political parties. With the 19% population in UP, the Muslim community is a powerful vote bank. Come elections, the community gets top priority in the poll plans of parties. But are the promises delivered by Netas? Election Roadie travelled to this town in northwestern UP to find out what elections hold for the people here. In India's largest state in terms of population, Muslims are a strong 19%. Their consolidated vote bank can be powerful enough to sway the fortunes of a political party. In Saharanpur, Lok Sabha constituency of Uttar Pradesh, where Deoband is situated, of 17 lakh voters, 6 lakhs are Muslims. In Deoband, Muslims are 1/3 of the town's population. Yet, in the 2017 assembly elections, the BJP won the seat. If I would say there is a myth and perception that in Saharanpur district, as far as Deoband, the assembly constituency is concerned, it is believed to be a Muslim dense populated and Muslim majority constituency. However, on the ground, it is factually incorrect. If you see the tally of total voters in 2017, out of 3,26,000 total voters of Deoband, 1,10,000 are the Muslim voters. So, relatively, they are 1/3 of the total voters or the total population in Deoband constituency. Now, yet again, since the 2017, it was the BJP MLA which ensured his victory from this seat. Now, the opposition camp perhaps planning to consolidate and mobilize this 1/3 voters together at mass to defeat the BJP on this seat. Now, that's the arithmetic being played on the ground here in Deoband. For Dilshad, a worker in a sugar factory in Deoband, the biggest concern is the absence of communal harmony. And he directly accuses the BJP of causing tensions in a society which for long had lived side by side. Deoband, because of Darul Uloom, is not your usual UP town. It has students not only from India but from various parts of Middle East. Ahead of the elections, the seminary has closed its gates to every political party. Deoband perhaps has no identity without Darul Uloom right behind me. Known as Makkah Medina of education, Darul Uloom, which was constituted in 1866, has great history, historic legacy for being participated in the Indian freedom movement. Darul Uloom Deoband also opposed India's partition post-independence. Now, the tradition continued. It has students not only from India but all across the globe. And more than the Islamic education, it also believes in Dini Talim and Dunyavi Talim. That means not only the Islamic education but also mainstream education like Arabi, Farsi, English, computers. And this is to meet the challenges for the youngsters. Those who are educating here, being educated here, should be part of the mainstream life, should battle the challenges that they're going to face in their future. As the election coming closer, Deoband Darul Uloom has decided
not to invite any politicians or any political outfit to hold any rallies here or to use this institution for their electoral benefit. A powerful voice of the community, the academic institution, often identified with religious dogma, says it's changing with the times. But outfits like the right-wing Bajrang Dal have different views. It accuses Darul Uloom of encouraging extremist elements in the guise of religious preaching and education. इस्लामिक राष्ट्र सब परेशान होकर और ये सब बैन कर रहे हैं, सब प्रतिबंध लगा रहे हैं और अभी सऊदी अरब सरकार ने वो सब बैन किया है क्योंकि वो समझ चुकी है कि आतंकवाद की पहली सीढ़ी केवल और केवल ये तबलीग जमात है। दुनिया के जितने भी आतंकवादी हैं उनके संपर्क और संबंध देवबंद के दारुल उलूम से मिले हैं। Those in Darul Uloom rubbish the anti-national claims made against the institution and point out to its role in India's independence struggle. दारुल उलूम देवबंद वो इदारा है, वो यूनिवर्सिटी है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। अगर ये दारुल उलूम देवबंद ना होता, दारुल उलूम देवबंद के ये छात्र और ये उस्ताद ना होते, तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। To be fair to Darul Uloom, it has brought about some change in madrasa teachings in Deoband, imposing lessons in English, maths, science and computer studies. Master Javed Akhtar is teaching present continuous and sentence formation to these children in one of the madrasa in Deoband. In 2019, there was a program of modernization of madrasas at a huge scale. And of course, Deoband being the academic, the Mecca and Medina of the education, mostly from the poor family, the more Muslim families, the children are more dependent, reliant on these madrasas. But over the years, gradually, there was a funding crunching, which was being provided either by central government or the state government. And that crunch led to the collapsing of this education system. Now, the most suffering is only for the poor families. But now, despite all the controversies being made around these madrasas, here what I see, the modern education is part of almost all the madrasas, not only the Islamic Taaleem, Mazhabi Taaleem, Arabic, Urdu, Farsi. They are learning English, mathematics, science, computers, and this is to prepare themselves to beat the challenges in the modern life. हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तमाम चीज़ें शामिल की थी। और उसकी वजह क्या थी? क्यों ज़रूरत लगी कि आखिर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है? दरअसल हमने जब अपनी तारीख यानी कि हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें ये मालूम हुआ कि दीनी तालीम तो एक फंडामेंटल हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर हमें इसको इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है अपने आप को, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। But life is getting tougher for teachers in the madrasas. Javed Akhtar teaches English at one of the madrasas. He says depleting funds from the government is affecting education reforms. तमाम मदरसे हमारे अलावा डिप्रेशन में ही है तमाम मदरसे। उनको चलाने वाले सो रहे हैं कि कैसे चलाएं। तो ऐसे में जो गरीब मुस्लिम बिल्डिंग पे सारे मदरस थे किराए के, ये हमारी तो निजी है, सोसाइटी के नाम जमीन है, लेकिन ज्यादा तो थे वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। अब उसमें था कि वो किराया दें या जो टीचर्स है उनको सैलरी दें, क्या दें, इसी बेस पे लगभग खत्म से ही है। Muhammad Sajid, a madrasa teacher, claims he hasn't got his salary for the last 4 years. He sells food in the evening to make enough to live by. जी देखो, हमने फास्ट फूड का काम कर रखा है। अब 4 साल कुछ महीने हो गए जब से तनख्वाह नहीं मिली। हम फास्ट फूड का काम करते हैं, उससे अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। Matloob Ali and Shagufta, teachers at government-supported madrasas, have the same complaint. 4 साल 8 महीने 18 दिन आज का लगा करके ये अभी तक नहीं मिली है ना? यूपी से भी नहीं मिल रहा है न। इनका जो रुका हुआ 6 महीने का, 6 महीने 4 दिन का है यूपी सरकार पर, अभी वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला। अच्छा, मदरसों के विकास में सरकार की ओर से कितनी मदद मिली आप सबको? मदद तो काफी मिली, लेकिन सैलरी जो लुकी हुई है उसकी प्रॉब्लम है। सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली। कितने दिनों से? 4 साल हो गए। 4 साल 8 महीने 18 दिन तनख्वाह नहीं मिली आपको? नहीं। The Muslim community living in rural belts have their own grievances. They claim the state government is increasingly ignoring their rights. They say the fight for equal opportunities is only getting tougher.
So when it comes to upliftment and empowerment of the Muslim community, the women in the community are really at the marginal scale. Most of the women in the rural areas from the Muslim community do not even understand the meaning of freedom. They do not have the liberty to live their life the way they want to. Now, if you compare the population of the Muslim community, particularly the women in the urban belt, they have more power, they are more educated, they feel empowered. But in the remote belts and the places like Deoband and in other parts of Uttar Pradesh, the women are really marginalized. They have to fight for their rights and many are deprived from it. This small colony dominated by Muslims in Deoband reflects the poor state of the community. Women particularly are the biggest sufferers here. घर वालों की दाब बीच में रहे, घर वालों से अगर घर वाले थोड़े वो कर लेंगे घर वालों को तो बाहर वाले नहीं जीने देते। मतलब अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकती, अपनी फिजिकल जिंदगी को जी नहीं सकती वो अच्छे से। यहाँ पे जो काम करने के लिए जाते हैं कि फलाने की लड़की वहाँ पे काम कर रही है, ऐसे बोलते हैं। सामाजिक रूप से लोगों का ताना सुनना पड़ता है। ताना सुनना पड़ता है, हाँ जी, ऐसा ही होता है। There are many women like Salma who blame the regressive patriarchal system within the community for their plight. There is praise for the Modi government for criminalizing triple talaq, as fewer women are now being abandoned. ऐसा तो कम होने लगा बहुत ज्यादा। मतलब इस सरकार में ये तलाक के बारे में ये जो बात है, इसमें तो बहुत सुधार आ गया। आपको लगता था पहले ज्यादा शोषण होता था? जी पहले बहुत होता था, अब नहीं है ऐसा। Muslim women in urban pockets of Deoband face similar problems and most blame their own ilk for it. जो अदर कास्ट है, I mean अदर रिलीजन है, उसमें भी नहीं मिल पाता है क्योंकि मर्दों के लिए ज्यादा परसेंटेज रखी जाती है और लेडीज के लिए कम रखी जाती है, तो पार्शियलिटी होती है लेडीज के साथ। हर जगह चुनौती है, औरत को हमेशा पीछे ही देखा जाता है। और आप ये देखिए कि अगर वो बढ़ना भी चाहती हैं तो उन्हें घर वाले रोक लेंगे, समाज रोक लेगा अगर औरत बाहर निकल कर आती है। They also fear that the BJP government is increasingly trying to marginalize Muslims. और सब भाईचारे से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाईचारे के बिना रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सब लोग हैं, सब आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। जब इलेक्शन टाइम आता है तब हिंदू मुसलमान सबको अलग अलग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है कि इससे उनकी वोट राजनीति बनती है। Educated women in the community say Muslims are used only as a vote bank. Promises by netas never see the light of the day. वोट के नाम पर लोग घर आ जाएंगे, उसके अलावा वोट बैंक के लिए ही ये मुद्दा उठाया जाता है। मुसलमान हिंदू का मुद्दा जो है वोट बैंक के लिए ही मेनली उठाया जाता है। आपको लगता है मतलब आपकी कम्युनिटी में भी, चाहे वो पुरुष और महिलाएं, वो भी वोट बैंक बनकर रह जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट बैंक है, वोट मतलब जब मुसलमान और हिंदू को बांटा जाएगा और बोला जाएगा कि हमें धर्म के आधार पे वोट देना है, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ अगर पढ़ा लिखा बंदा है वो ये काम नहीं करेगा। वो अपने माइंड के हिसाब से वोट देगा, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। 18-year-old Dua Hussain is first-time voter. Her biggest concerns are unemployment and equal opportunities for women. हम एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद करते हैं और इक्वालिटी की उम्मीद करते हैं। अब ये इक्वालिटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड रिलीजन बोथ। Young men from the Muslim community have other worries. Abdul is a struggling entrepreneur. चुनाव में तो देखिए कारोबार ही होना चाहिए क्योंकि युवाओं को तो मेन तो कारोबार है। अब मैं कारोबार के लिए निकला हुआ हूँ। अगर मैं कमाऊंगा, खिलाऊंगा तो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर इस सरकार से हमें फायदा नहीं हो रहा है तो हम इसको दोबारा इलेक्ट नहीं कर पाएंगे। In the rural belt of Deoband, unemployment is high. The only livelihood is working at sugarcane crushing and jaggery making units. Many are uneducated as the families did not have the means to send them to schools. More than anything, social security for Muslims appears to be taking a center stage in this part of UP. They say fake cases are made out against Muslims by police. The community has not forgotten the recent case of Zishan Raza dying of injuries in a police raid against alleged cow slaughters. उन्होंने फर्जी दिखाया कि गौकशी में पकड़े गए जिशान जो मृतक है उसके हाथ में तमंचा दिखाया
और आपस में झगड़ा हुआ, उनकी गोली उनके लग गई, जबकि बिल्कुल सरासर झूठ है। उनके पास जो है लाइसेंस की राइफल थी, डीबीएल गन थी। तो आपने इस घटना की शिकायत आगे कहीं की? मैं इस घटना की शिकायत इसकी वाइफ ने हर जगह, प्रधानमंत्री के यहाँ हमने की, गृह मंत्री जी के यहाँ हमने की, योगी जी के यहाँ हमने की, अल्पसंख्यक आयोग में हमने दी, डीजीपी, आईजी, डीएम साहब, एसएसपी साहब, कोतवाल, सबके हमने आगे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम अल्पसंख्यक आयोग में पहुंचे, वहां से पुलिस वालों को तलब किया और वहां पे इसकी कार्रवाई चल रही। A local journalist, Musharraf Usmani, says there has been no change in the socio-economic conditions of Muslims. On the other hand, the insecurities have increased, a view echoed by others. जब से ये सरकार आई है, हम 7 साल से देख रहे हैं, आपस में लानत मलामत चलती रहती है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने इस मुद्दे पे बात की, कम से कम किसी ने तो आम आदमी के बारे में पूछा। तो सामाजिक सुरक्षा तो आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेज दूं, ताकि वो ये कम से कम इस चक्कर में ना पड़ें कि भैया ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है। They say the frequent raising of Jinnah by politicians is unsettling, as it's used to target Muslims who have been living here all their lives and owe their allegiance to India. जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। जिन्ना का नाम लेकर हमें जलील किया जाता है। जलील इसलिए किया जाता है कि हम उभर ना सकें, हम जहाँ हैं उससे नीचे चले जाएं। मुसलमान और ये उनके समाज के युवा, उनके बच्चे किस कदर आगे बढ़ पाए, कितना आगे बढ़ने में मदद मिली उन्हें? उनको तो बहुत कमी की साथ में आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो नाम मुस्लिम आ जाता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। A common refrain in these parts is the insecurities of being a Muslim. Equality is what they want. हमारे लिए तो मुद्दे ये हैं कि हमें तो जो बेसिक है वो मिलना चाहिए, जो जिस तरीके के हर इंसान अपनी ज़रूरियत के हिसाब से सब चीज़ें समझता है कि भाई ये चीज़ें, ये फैसिलिटी हमारे मुल्क में हमें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। As another election approaches, the Muslims of Deoband know there will be more promises by politicians, but their experience of the past has left them bitter about the future. Battling from poverty, illiteracy, and from marginalized class, they have come all the way and become one of the most empowered section in the society. The Muslim community now doesn't want to be seen only as a vote bank for any politician or political outfit. Rather, they want their core issues like education, better healthcare facilities, more source of income, employment, those issues on the ground to be addressed. However, when it comes to Uttar Pradesh, the sense of insecurity, the sense of right of social security, that seems to be one of the major and key factor for the Muslim community in this coming assembly election. Well, that's all for now in the election road. For news and updates, keep watching India Today.